आज हम करेंगे अपनी मम्मी टमी लोअर बेली फैट, हैंगिंग बेली और बेली पूंछ को बाय बाय, क्योंकि मैं लेकर आई हूं आप सबके लिए 5 मिनट्स 5 एक्सरसाइजेस टू लूज योर लोअर बेली फैट। फाइनली अब आप लोग अपने मनपसंद कपड़े भी पहन सकते हैं और जो लोग लोअर बेली फैट से परेशान हैं वो सिर्फ बैठे बैठे, चाहे कुर्सी हो या पलंग हो या सोफा, टीवी देखते देखते आसानी से इन एक्सरसाइजेस को मेरे साथ साथ कर सकते हैं। तो अब कोई बहाना नहीं चलेगा, चाहे आप एक टीनेजर हैं या फिर अभी 3-4 महीने पहले ही आपने एक बच्चे को जन्म दिया है या फिर अब मेनोपॉजल स्टेज में है, सब लोग ये वाली एक्सरसाइज आसानी से कर सकते हैं। क्योंकि काफी बारी देखा जाता है हमारा जो स्टबन बेली फैट है लोअर बेली पर ही आके फंस जाता है। ये आपके हार्मोन्स इम्बैलेंस की वजह से भी हो सकता है, जो कि एक हैंगिंग बेली का रूप ले लेता है। ये बड़ा ही स्टबन बेली फैट है जिसको टस से मस होने में बहुत टाइम लग जाता है अगर आपने अभी क्विक एक्शन ना लिया। तो ये वाली इजी और इफेक्टिव एक्सरसाइजेस करके ही अगर मैं पतली हो सकती हूँ, एक फ्लैट टमी पा सकती हूँ, तो आप लोग क्यों नहीं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि मुश्किल एक्सरसाइजेस नहीं कर पाते, इनफैक्ट देखते ही डर जाते हैं तो करेंगे कैसे, और फिर एक आध दिन करके उसको छोड़ देते हैं। लेकिन जब इजी एक्सरसाइजेस का आप सहारा लेके आसानी से अपना बेली फैट कम कर सकते हैं, रोज आपने ये वर्कआउट करना है मेरे साथ साथ, तो देखिएगा जरूर आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। क्योंकि ये वर्कआउट है बिगनर फ्रेंडली, नो इक्विपमेंट नीडेड, नो जंपिंग, नो स्किपिंग, बहुत ही आसान है। आइए मिलके साथ साथ करते हैं, इंतजार किस बात का है, जल्दी से आके विराजमान हो जाइए। इस एक्सरसाइज को शुरू करते हैं। Ready, set, go. You did it. Ready, set, go.
did it. Ready, set, go. You did it. उम्मीद करती हूँ आपको आज का वर्कआउट जरूर पसंद आया होगा, तो जल्दी से मेरे इस वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, मेरे चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें। मैं मिलूंगी आपको और बड़े सारे एक्साइटिंग वीडियोस के साथ में। अगर आपके पास कोई क्वेश्चंस या क्वेरीज हैं, जल्दी से कमेंट सेक्शन में पूछ डालिए और मैं मिलूंगी आपको फिर से। तब तक के लिए टेक केयर।